بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Online participants, am I audible? Please confirm. Online participants. Yes, okay. Okay, first of all, welcome to all of you in the second day of this machine learning workshop. And I also welcome to Dr. Ahmed Mahmood, who is a guest speaker for today on the topic of climate data and using of climate data in machine learning and its application. So before going to in detail of today's activity, first of all, I will try to explain a little bit overview of day one activities. Basically, during the first day of this workshop, we have started with the guest speaker on the topic of genomics, and then after the guest speaker talking, उसके बाद हमने कुछ hands on practices की थी using genomic data, and उसको हमने अप्लाई किया था with the help of machine learning and deep learning. आपने उसके ऊपर कुछ machine learning के जो हमारे पास classical algorithms से हमने उनको अप्लाई किया था. एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिकल सेशंस किए थे. प्रैक्टिकल सेशंस के दौरान कुछ चीज़ें हमारे पास सामने आई थी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने बेटर परफॉर्म किया, बट सम टाइम उनको कुछ एरर्स वगैरह इशू आ रहे थे. बट राइट नाउ फॉर बेस्ड ऑन दीज इश्यूज एंड सम एरर्स, जो आज के लिए हमने थोड़ा सा जो अपनी वर्कशॉप है उसको बेटर ऑर्गेनाइज की है. कि मीन्स हम एक एक्टिविटी आपको खुद से करवाएंगे एंड देन मल्टीपल डाटा आपके लिए हमने अवेलेबल करवाया है जिसके ऊपर आपने खुद से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी होगी. तो दिस इज द शॉर्ट ओवरव्यू एंड डिटेल ओवरव्यू, और जो उसके हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी, एंड इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट एंड ओवरव्यू ऑफ दैट algorithm during our hands-on session. And this is the simple overview of first day activities, and then we will proceed to the lecture of a guest speaker, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम हम हैंड्स ऑन सेशन को दे सके और मिनिमम टाइम हम जो आप सामने बातें कर रहे हैं उसको हम बिल्कुल सिक्यूज कर रहे हैं. और जो हमारा आज के जो गेस्ट लेक्चर होगा वो भी जस्ट ओनली फॉर 30 मिनट होगा, राइट. तो इंशाल्लाह आफ्टर दैट वी विल गो टू द our practical session of today's data, which is how we can use climate data using machine learning and deep learning for future prediction. Thank you. Now I would like to invite our guest speaker, Dr. Ahmed Mahmood, Assistant Professor, School of Interdisciplinary Engineering and Sciences, NAST. He holds a PhD in Environmental Sciences from the University of Yamanashi, Japan, specialized in climate change, sustainable development, and environmental sciences, with a strong focus on soil health, bioremediation, sustainable agriculture, and plant microbe interactions. Thank you so much. So, yeah, I will try. ये जो mic है, it is
doing nicely. नवीद साहब वो कॉलर माइक है या बस यही यूज करना पड़ेगा? Okay. Okay, but I will be like moving around. So इसमें वो आपके Google Meet है ना? Screen shared है नहीं? Okay. 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 So yeah, just like quickly, climate change is a subject which nobody like can say he or she doesn't know. और अभी जो पाकिस्तान की कंडीशन है उसमें of course we are seeing more and more extreme weather events, and not only that, excessive monsoon rainfalls, extended monsoon rainfalls. So multiple names हैं उस चीज के सारे ना. ये जिस कंडीशन में आज हम हैं, this is something not normal. Like we have created this situation through various activities. So we will just try to go through those activities, and ultimately we will be going towards how machine learning can be utilized in making better decisions for climate science, also for sustainability component. So how many of you know like what is changing climate and what is the difference between climate change and sustainability? Just any rough guesses, rough ideas, please. Years, maybe sometimes our decay might change from climate. Okay. Anyone else, please? So online participants, they can also, like, I'm sure they can unmute themselves. So what can be the difference between sustainability and climate change? Like, have you heard both of these words? Okay. And what do you think is the difference? So yeah, please go to this website. Like if you are utilizing your mobile phone or even your laptop, so just quickly go to this website, showyourstripes.info. If you just search for show your stripes, so you will definitely find this. And when you log into that website, just choose Asia and then Pakistan and then Islamabad or any other district which is available. Okay, I will also open this in the Google Chrome, like. Yeah. Okay. So it's show your stripes. So this website actually okay, so ये जो website है ये basically क्या करती है? It shows the temperature change since 1875. So if we go to Pakistan and all of Pakistan, or let's take Islamabad. So if we label these stripes, so we can see. So what it means is कि 1875 में जितना temperature था उससे कितना चेंज हुआ है आज के दिन तक ना. सो अगर आप इसकी बजाय ये वाला बार देखेंगे तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया. सो 1875 में जो भी टेम्परेचर था उससे डिक्रीज कितना है और उससे राइज कितना है. और पिछले 20 सालों में सिंस 2000 वी हैव सीन नो डिक्लाइन एक्सेप्ट फॉर 1 ईयर, एंड दैट वाज आल्सो वेरी माइन्यूट. सो बाकी सारे के सारे जो टेम्परेचर है दैट इज ऑलमोस्ट 1.5 degree centigrade. So that bar we have already crossed. What happened was इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1870s 1860s जब आया तो उससे पहले जितनी भी बर्निंग थी दैट वाज जस्ट फॉर आपके लिए खाना बनाने के लिए या छोटे मोटे पर्पसेस के लिए. 1860s में भी इन्वेंटेड लाइक 1860s या उसके आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वो स्टीम इंजन हमने इन्वेंट कर लिया. एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट इज अ बूम इन बर्निंग. वो बर्निंग किस चीज की है? इट इज वुड, ऑफ कोर्स, लकड़ी एक कंपोनेंट है. कोल, we discovered
कि जैसे ही हम जमीन खोदते हैं हमारे पास कोयला मौजूद है, वो हमने निकाल के बर्न करना स्टार्ट कर दिया। सिमिलर हैपेंड विद क्रूड ऑयल। सो जितना भी ऑयल जिस भी फॉर्म में निकलता है उसके बाद उसको पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करते हैं। सो व्हाट वी डिड इज दैट एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। स्मोक पाकिस्तान में कब से आना स्टार्ट हुई, एनी आइडियाज? सो फर्स्ट टाइम वी सॉ स्मोक इन 2016। ओके, चाइना में इससे पहले ये फोटोकेमिकल स्मोक की बात हो रही है, एक और स्मोक है लंदन स्मोक, सो दैट इज डिफरेंट। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है चाइना में, दे ऑब्जर्व्ड दिस बैक इन 2005। सो व्हाट हैपेंड इज अर्थ का, ये ग्लोब का एक होमियोस्टेसिस है। होमियोस्टेसिस आप ऐसे कह लें कि इट हैज अ कैपेसिटी टू टॉलरेट द चेंज। ओके, सो हमने 1860 से लेके वो बर्निंग स्टार्ट कर दी एंड देयर केम अ लेवल, पहले अर्थ जो है इट्स ट्राइड कोप अप विद दैट। ओके, लेकिन देयर केम अ टाइम व्हेन इट कुड नो लॉन्गर कोप अप विद दैट, और अल्टीमेटली वो जो स्मोक वाला कंपोनेंट है दैट इज वन ऑफ द इंडिकेशंस कि वो जितना भी स्मोक हमने एयर में भेजा था इट इज कमिंग बैक, एंड दैट हैज ट्रूली हैपेंड इन केस ऑफ पाकिस्तान। हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाइक इट वाज बैक इन 1860s, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं थी, बट अल्टीमेटली विद द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड एवरीथिंग वी आल्सो started relying on the fossil fuels, and जो आज condition है पाकिस्तान की, this is something it was expected of course, but this is all created by us now. So this is not only the case of Pakistan, it can be like any city, आप जहां यहाँ पे जो मर्जी city देखेंगे you will see a huge change in temperature. सो इसके साथ टेम्परेचर राइज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट हम हर उस इवेंट को कहते हैं जिसमें नॉर्मल से ज्यादा कोई भी काम होता है। पाकिस्तान पूरे का पूरा इट हैज रिसीव्ड फॉर ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स 200 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर। चकवाल से नीचे या रावलपिंडी से नीचे जितने इलाके हैं 200 मिलीमीटर से ज्यादा रेनफॉल वी हैव नेवर रिसीव्ड। लेकिन दिस मॉनसून सियालकोट में कल तक की टोटल रेनफॉल पिछले 3 दिन की 400 मिलीमीटर है। सो दिस इज व्हाट इज एन एक्सट्रीम वेदर इवेंट, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट। सो नॉट ओनली दैट, व्हाट एल्स इज हैपनिंग, वी आर लूजिंग मल्टीपल स्पीशीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। हमारे पास फैसिलिटी है, वी कैन टर्न ऑन द एयर कंडीशनर, वी कैन टर्न ऑन द फैंस, but not for the birds, not for the plants. So कितने लोगों ने recently वो green parrot देखा है open में? So it was a species which belonged here, no? कितने लोगों ने फाख्ता देखी है? कितने लोगों ने sparrow देखी है? All उल्लू जो थे, they were here, no? So they are no longer here because they cannot tolerate that temperature rise, which we can, luckily due to the facilities. So this is a bigger loss, and ultimately what we have done is all these local species, so they are no longer here. It's not only about the birds, it's also about the plants. So पहले हम कई किस्म के plants देखते थे, flowers देखते थे, but they are no longer here. So अब सिर्फ पार्थेनियम आपको नजर आएगी. Please do Google what is parthenium. And that is also not edible by animals or like birds or someone. Same went for the insects. So the major issue is behind the climate change. अभी हम climate change को focus करते हैं. Burning of fossil fuels, major जो role playing है. Of course कहीं ना कहीं mismanagement, lack of plantation, deforestation. नीलम वैली आजकल वो बड़ा घूम रहा है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे. The problem is the major focus is always burning of fossil fuels, which release different kind of greenhouse gases. 6 different greenhouse gases हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को mainly हम because इसकी measurement या उसकी tracking easy है, तो हम जब भी greenhouse gases की बात करते हैं we discuss in terms of carbon dioxide. आप जब भी देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड E लिखा होगा, that is carbon dioxide equivalent gases.
कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन एक और मेजर प्रॉब्लम है, HFCs हैं, N2O है, और भी मल्टीपल एयर क्वालिटी की गैसेस डिफरेंट हैं, ग्रीन हाउस गैसेस डिफरेंट हैं जो क्लाइमेट चेंज में रोल प्ले करती हैं। और हर चीज में, फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है, इसके बनाने में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर गई है। ये जो मैंने शर्ट पहनी है, ये जब बनाई गई, कॉटन उगी, उस टाइम पे ट्रैक्टर चला, ट्रैक्टर ने डीजल यूज किया, दैट इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एमिशंस। जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई टू टू रन दैट ट्यूबवेल, जिससे उस कॉटन को पानी लगाया गया, उसने अगर वो कोल बेस्ड पावर प्लांट यूज किया, दैट मीन्स उसने सिग्निफिकेंट अमाउंट में एमिशंस की हैं। उसके बाद ये कॉटन वहां से चली, मंडी में गई, डीजल यूज हुआ। उसके बाद वो मंडी से आगे फैक्ट्री में गई, डीजल यूज हुआ। उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन के दौरान ईच लाइट, ईच फैन इज रिलीजिंग मल्टीपल एमिशंस इनटू द एयर नाउ। सो अल्टीमेटली एक जो शर्ट है, इट हैज अराउंड 400 to 800 kind of kgs of carbon dioxide. Yeah, I am missing the unit, but somehow it is huge. Okay. The problem is कि वो जितने भी ग्रीन हाउस गैस की emissions हैं, they are ultimately causing multiple problems for the climate, and unfortunately in Pakistan we are seeing multiple problems. So दूसरा जो component है, that is sustainability. For example, हमारे पास एक हमारे जो बड़े थे, उनके पास एक एग्रीकल्चरल लैंड थी, उसके अंदर डिफरेंट दरख्त थे। इन केस वो एक दरख्त काटते थे, दो और उस टाइम पे ग्रो हो जाते थे, तो अल्टीमेटली इट वाज सस्टेनेबल। बट विद द राइज ऑफ पॉपुलेशन, विद अराउंड 240-260 मिलियन पीपल, वही पीस ऑफ लैंड है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट सस्टेनेबल। नो, सो दिस इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ आवर प्रैक्टिसेस। हम वो जमीन के जो रिसोर्सेज हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कैसे कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल वाटर। सो हम डेली मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर ग्राउंड वाटर से, वाटर टेबल से निकाल रहे हैं, बट हाउ मच इज गोइंग बैक? आई डोंट नो। सो पिछले 20 साल में वी हैव सीन अ डिक्लाइन ऑफ वाटर टेबल अप टू almost maybe 20 feet something, कहीं पे इससे भी ज्यादा है, even 100 feet in few of the regions in Punjab. So not only that, उसके अलावा जो भी रिसोर्स है अर्थ का, सॉइल है फॉर एग्जांपल, हम उसको यूज करते हैं हर साल, उसमें डिफरेंट किस्म के फर्टिलाइजर, डिफरेंट किस्म के पेस्टिसाइड हम ऐड करते जा रहे हैं, एंड देन देयर केम अ टाइम कि हमारी जो फूड है दैट इज ऑल्सो पोल्यूटेड। जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच है, कोरिएंडर है, मिंट है, all of them they contain different amount of pesticides. So the problem is कि ऐसी diseases which were never common in this region, they have developed here. So it's very unfortunate that almost every one of us knows at least one person who is suffering from cancer. No, not only that, हमारे बच्चों के अंदर जो different autoimmune disorders are rahe hain, so where they are coming from? Of course they are coming from polluted soil, polluted air, polluted water. No, so the ultimate problem is कि हमने resources को sustainably use नहीं किया, and unfortunately we are here. So to cope up with that, the globe has always been working on this component. Sustainable development goals से पहले millennium development goals थे. The ultimate benefits are environmental, social, and economic. Okay, so what we really need to do is, of course, सारे components अपनी जगह पे हैं, but of course we need to use the water in a sustainable manner. Okay, we need to make energy more cleaner so that uska jo carbon footprint hai that is reduced. We need to work more towards decent work, economic growth. So every sustainable development goal, it somehow brings that sustainability of use of the resources of this world. In case अगर हम उनको sustainably use नहीं करेंगे, तो जो आज पाकिस्तान की condition है, I literally see कि within maybe next 5 to 10 years,
अभी हम पानी खरीद के पी रहे हैं, शायद अगले आने वाले दिनों में हमें एयर जो है वो भी खरीद के यूज करनी पड़े, एंड वी आर रियली एट दैट पॉइंट। प्रॉब्लम इज कि जो अर्थ है या जो एटमॉस्फेयर है, इट इज सो मल्टीफेसेटेड एनवायरमेंट कि उसको स्टडी करना इंडिविजुअली, जिस तरह हम बाकी सारे के सारे रिसर्चेस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कीप वन कंपोनेंट वेरिएबल, बाकी सारे कांस्टेंट रख के वी स्टडी। द प्रॉब्लम इज दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। सो द अर्थ या जितने भी लिविंग इकोसिस्टम्स हैं, दे आर सो मच इंटरकनेक्टेड कि हम उनको सेपरेटली स्टडी भी नहीं कर सकते। एंड द सॉल्यूशंस, they are also very interdisciplinary or interrelated. So that is why machine learning या जितने भी जो new tools हैं, so they will play a part. For example, climate data, अभी हमने वो show your stripes की एक्टिविटी में देखा कि 1875 से लेके अभी तक को जो टेम्परेचर चेंज, वो एक ग्राफ है, उसको एब्जॉर्ब करना शायद हमारे लिए इजी है। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करें कि हर दिन का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर हो, हर दिन की प्रेसिपिटेशन रेनफॉल, हर दिन की ह्यूमिडिटी, उस चीज को प्रोसेस करना एक ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी से बाहर है। सो दैट इज वेयर मशीन लर्निंग, एआई और एनी अदर टूल्स कम इनटू प्ले। अभी तक अगर हम सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट साइंस में देखें तो मल्टीपल विंडोज एप्लीकेशन टाइप मॉडल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, हम क्या करते हैं उसमें, क्लाइमेट सिमुलेशन करते हैं। क्लाइमेट सिमुलेशन कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, हम उसको पिछले 10 साल का डाटा देते हैं, 20 साल का, 30 साल का, कि ये हमारे वेदर पैटर्न्स हैं एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। सो इट विल अल्टीमेटली एक्सपोलेट या वो उसको एस्टिमेट करके आपको रिजल्ट दे देगा। इसके अलावा भी मल्टीपल टूल्स या मल्टीपल मॉडल्स, विंडोज बेस्ड, या आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट इन दिस काइंड ऑफ कंपोनेंट जिसमें you are getting the training, so my domain is more in the wet lab component. So all those tools, they are available. उसमें वो simulations भी कर रहे हैं, वो farmers को better decision making में help कर रहे हैं। For example, there is a tool called aqua crop. So उसका काम ये है कि हम उसको अपने सॉइल की हिस्ट्री बताते हैं, अपने रीजन क्या, उसको सारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल बताते हैं, एंड अल्टीमेटली उसको हम बताते हैं कि हमारे पास इतना इरिगेशन वाटर मौजूद है, प्लीज हेल्प मी डिसाइड कि मुझे किस किस टाइम पे इरिगेशन देनी चाहिए। ओके, सो दैट हेल्प्स अल्टीमेटली कि जो इंफॉर्मेशन एक ह्यूमन प्रोसेस करे और समटाइम्स वो गलत प्रोसेस कर ले, सो उसकी बजाय जो मशीन उसको प्रोसेस करके देगी, दैट विल बी अ बेटर रिजल्ट। सो दे हैव ऑलवेज बीन हियर, और उनकी जो जितने भी क्लाइमेट प्रोजेक्शंस आप देखेंगे, दे ऑलवेज डिपेंड ऑन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड some part of that artificial intelligence. But with the rise of Gen AI, LLMs and everything, so we are seeing a change, seeing more and more information coming in, and that processing is the major component where we expect machine learning and other models, they or like the computation can help. So before we proceed to the next component, so please do let me know if you have any questions, and then we will move directly to how ML can help in climate and sustainability. Please. So basically हम बात करते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज, but we ignore the effect of artificial intelligence basically on the climate change. Basically जैसे आपने बात की कि बहुत सारी हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, और अभी जैसे जैसे हम फास्टर मूव कर रहे हैं, हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और इन सारी चीज़ों पे आ गए हैं। तो अब अगर हम ये देखें कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल या जनरेटिव एआई, so how much GPUs we need for that? And that GPUs actually producing a lot of heat, a lot of carbon monoxide, and that GPUs basically consuming a lot of energy too. मतलब electricity बहुत ज़्यादा use हो रही है।
तो हम एम्फेसाइज करते हैं कि हम AI को यूज करेंगे टू सस्टेन आवर क्लाइमेट चेंज, बट ऑन द ऑपोजिट साइड AI खुद इफेक्ट कर रही है क्लाइमेट चेंज को, और वो लार्ज अमाउंट में कर रही है, क्योंकि इतने सारे GPUs चाहिए होते हैं एक्चुअली. Thousands of GPUs are basically need for the large language model and generative AI etc. तो huge amount of energy produce हो रही है, यूज हो रही है, इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है. तो उस चीजों के बारे में फिर हम क्या करें, क्योंकि हमने उस चीज को तो कंट्रोल करने के लिए कुछ किया ही नहीं, ना हमने कोई पॉलिसी जनरेट की है, ना हमने कोई इस तरह का मैकेनिज्म जनरेट किया है. ये सारी हमारे पास क्लाइमेट चेंज की जो भी रीजंस आ रही हैं, हम इनको तो डील करते हैं AI से, लेकिन AI की वजह से जो क्लाइमेट पे इफेक्ट हो रहा है, हम उसको कैसे डील करेंगे? So thank you so much. Yeah, this is something when I share the slides, so I included that component कि जितने भी AI and of course जो उसके cooling है, वो सारा component जो है that has significant environmental या carbon footprint. So at this moment, I think the only like जो component जो जिसमें attention ज़्यादा है, that is कि कैसे उस चीज को बेहतर से बेहतर किया जाए. But in the meanwhile, people are also working on sustainable cooling of the GPUs and everything. So maybe utni speed se to shayad ye grow na kare component, but somehow people will ultimately, or we all will ultimately reach to that point with better planning. I think yeah, with the integration of those tools, हम कहीं ना कहीं से वो nipping the bud कर रहे होंगे. And ultimately, of course, वो जो nip the bud कर रहा है जो component, so उसकी भी sustainability is in question. But ultimately, this will be resolved, I believe, with time. So जिस तरह भी like oceans and everything, so उसके अंदर लोग GPUs जो हैं उनको bury कर रहे हैं and everything. So I think that is something still researchable. जी और किसी का questions, please. Thank you so much, sir. A very interesting topic for me. जिस तरह सर यहाँ पे जो लिटरेचर में या जो रिसर्च हो रही है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो सर हम कैसे इसको देख सकते हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर, कि मतलब इस ग्राउंड लेवल के ऊपर कितना काम हो रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर या सस्टेनेबिलिटी के ऊपर. वैसे अगर हम गूगल स्कॉलर पे चले जाए तो हमें मंथली बेसिस पे या एयर वाइजली काफ़ी रिसर्च पेपर मिलते हैं और काफ़ी उसमें नॉवल्टी मिलती है. बट ग्राउंड लेवल पे आप सर क्या देख रहे हैं इसको, कि मतलब कुछ काम हो रहा है स्पेशली पाकिस्तान लेवल के ऊपर? So I think जब से मतलब मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स, सो मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स हम उन कंपोनेंट्स को कहते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल बिकॉज जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी है ना, इंडस बेसिन ट्रीटी है, सो द प्रॉब्लम इज कि वो प्रॉब्लम कहीं का है, सोल्यूशन कहीं है. जिस तरह स्मोग है, हम कहते हैं इंडिया से सारा धुआं हमारे पास आ रहा है, तो इसी तरह माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे कुछ रीजन में, फॉर एग्जांपल साइबेरिया से बर्ड्स मूव करके किसी और जगह पे जाते हैं, वो सारों को मार देते हैं, वापस नहीं जा पाते. सो दे आर ग्लोबल रिसोर्स. नो, वो किसी एक कंट्री का रिसोर्स नहीं है वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं. सो इन मसाइल को हल करने के लिए देयर वर मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स. आप सबने पढ़ा होगा ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो रही थी, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे पाबंदी लग गई ना. सो दैट पाबंदी या वो जो बैन था, दैट केम फ्रॉम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक आप कह लें कि इकट्ठा पूरी दुनिया के जो कंट्रीज हैं, दे प्लेज्ड कि जनाब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को पाबंदी लगा दी जाए. उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आए, उसके बाद मल्टीपल लेवल्स जो हैं वो चलते आ रहे हैं. सो जो मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं, दे हैव पुश्ड not only international legislation but also local legislation. उसी के थ्रू फॉर एग्जांपल हम नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस सबमिट करते हैं. UNFCCC पेरिस एग्रीमेंट का सबने नाम सुना होगा. हमारे पास आज टाइम थोड़ा शॉर्ट है. सो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ. उसके बाद से सब कंट्रीज जो उसके सिग्नेटरी हैं, 170 कंट्रीज हैं एक्सेप्ट फॉर अमेरिका, सॉरी टू से. सो उसमें उन सब ने अपनी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन सबमिट करनी होती हैं. उसका मकसद बेसिकली है कि हमारी फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से इतनी एमिशंस हैं, 2030 तक हम इतनी कम कर लेंगे. और वो सिर्फ सबमिट नहीं करना होता, उस चीज को अपने अपनी पॉलिसी में एंटर करना होता है. सो पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, इट्स लोअर, 0.91% है टोटल ओवरऑल. बट इन द अफेक्टेड वी आर the fifth most vulnerable country in the changing climate. So
अल्टीमेटली जो वो उसका इम्पैक्ट रिड्यूस होगा, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे पे आएगा डेफिनेटली, बट एज अ कंट्री वी आर ट्राइंग। उसमें अगर एग्रीकल्चर की फॉर एग्जांपल बात कर लें या इवन रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लें, तो सोलर वी हैव इंपोर्टेड अराउंड 40,000 मेगावाट ऑफ सोलर विद इन लास्ट 3 years। हमारी टोटल पीक डिमांड 26,000 मेगावाट है। So the change is there, or even early retiring of coal-based power plants, that is in discussion. Not only that, hydro पे focus जो है वो increase हो रहा है. We will be expecting more smaller 1 megawatt kind of windmills very soon into the industry. So industry has always been very resilient. Government की जो नीका या बाकी energy की bodies हैं, they are supporting that. In agriculture हम क्या कर रहे हैं? Of course वो भी एक बड़ा major contributor है towards greenhouse gases. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो उससे भी पीपल आर ट्राइंग कि वो कम से कम ट्रैक्टर चले, कम से कम एमिशंस हो, तो देयर आर स्टेप्स विच आर गोइंग ऑन पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान टू, बट जो लैक ऑफ इंटीग्रेशन है दैट इज हर्टिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं वो सेपरेट काम कर रहे हैं, सो अंटिल वी आर काइंड ऑफ कनेक्टेड, सो तब तक शायद वो उसके रियल रिजल्ट्स हम ना देख सकें, बट अल्टीमेटली वी आर गोइंग देयर। So any other quick questions so that we can move to the next part, please? सर हम एयर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर जिस तरह आपने बताया कि हम जीपीयूज को पानी में सबमर्ज कर देते हैं या डाटा सेंटर्स को सबमर्ज कर देते हैं, तो उससे मरीन लाइफ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? या मेरीन लाइफ जो है दैट इज आल्सो वेरी सेंसिटिव टू नॉइज, टू द वाइब्रेशंस, सो ये एक बड़ा मेजर कंपोनेंट है। लेकिन समहाउ जो भी ये जीपीयूस की बेरिंग है या जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, सो दे ऑलवेज फाइंड, एंड मशीन लर्निंग या वो जो कंपोनेंट्स है दे हैव हेल्प्ड them identify those particular regions जहां पे marine life comparatively कम है। जिस तरह डेड सी है, फॉर एग्जांपल डेड सी does not contain much of marine life, so जहां पे salinity का लेवल जो है it's higher than 45 something decimals per centimeter, वहां पे it's comparatively better to store, so we will identify those regions। पाकिस्तान में तो unfortunately हमारी जो marine life है that is already damaged। हमारा जो west component है that is better, जो ईस्ट है वो सारे का सारा डैमेज्ड है, बिकॉज वहां पे मुंबई है, यहाँ पे कराची है, सो बोथ ऑफ देम दे हैव डैमेज्ड दैट कंपोनेंट, बट समहाउ विद द 70% ऑफ द वर्ल्ड इज ओशन नाउ, और उसके अंदर वी रियली कैन फाइंड सम हॉटस्पॉट एरियाज वेयर marine life is least affected, but somehow that is compromised। कोई और क्वेश्चन प्लीज? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे रिसर्च के हवाले से ये क्वेश्चन है कि जब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या टॉपिक है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेदर प्रिडिक्शन है, और उसको हम उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं या वो हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं यूजिंग मशीन लर्निंग, तो उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होंगे, क्या हम अपनी रिसर्च में उनसे भी उनके साथ भी उस डोमेन पे भी काम करेंगे, या सिर्फ हमारा एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा या डोमेन होगी? सो आई थिंक कोई भी चीज, अब जितने भी क्लाइमेट मॉडल्स हैं वो सारे के सारे दे डू नॉट रियली रिलाई सोनली ऑन वेदर डाटा, ठीक है। सो जब भी आप इन केस आप सिर्फ वेदर को ही प्रिडिक्ट कर रहे होंगे, तो इट विल नॉट ओनली कि आप सिर्फ उसको वेदर का डाटा देंगे, यू विल ऑल्सो गिव इट द डाटा अबाउट सोशो इकोनॉमिक्स, बिकॉज जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं विच कैन नॉट अफोर्ड एयर कंडीशनर्स एंड एवरीथिंग, सो वो कंपोनेंट जब आप उसके अंदर ऐड नहीं करते, तो दैट गिव्स हाफ रिजल्ट्स लाइक व्हाट आई बिलीव। सो मेरे ख्याल में इट्स मोर ऑफ इंटीग्रेटेड, ऑफ कोर्स बहुत मेजर फोकस आपका जो भी होगा यू विल कीप दैट, और लेकिन somehow you will need as much as data to be integrated to find better results and decisions। जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो so that we can move forward। Okay, what happened when we noticed a big change during lockdown, especially when weather changed drastically? Yes, thank you, Iman Hussain. So that was really some component which we observed. For example, lockdown may, when the transportation sector which makes around 70% of all the emissions,
सो सॉरी 16%. सो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जब बिल्कुल रुक गया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन, सो वी लिटरली सॉ अ चेंज, नो. सो दैट वाज अ मेजर कंपोनेंट. और इसी तरह इन केस ये सारे के सारे वो रोल प्लेयर्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज में मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं. सो इन सब में से अगर किसी एक कंपोनेंट को भी हम ले लें और उसको रिड्यूस कर लें, सो दैट अल्टीमेटली ट्रांसलेट्स इनटू बेटर क्लाइमेट या बेटर एयर फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम. सो इसके अलावा ईमान ने एक और कमेंट ऐड किया, दैट इज अबाउट द फायरफ्लाइज. सो जो हम बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात कर रहे थे कि जितने बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, दे हैव लॉस्ट, बट टू रिवाइव देम दैट इज something it will be very difficult at this moment. Okay, so moving to the second component. So जो भी हम कंपोनेंट डिस्कस करते हैं उसमें ग्रीन हाउस गैसेस की बेस पे हम आगे सारे के सारे सेक्टर्स डिस्कस करेंगे ऑन हाउ टू मैनेज देम बेटर, या कैसे मशीन लर्निंग या एआई या एलएलएम्स दे कैन हेल्प. सो ग्रीन हाउस गैसेस में अगर हम बात करें, एनर्जी का मेजर रोल है, इंडस्ट्री है, वेस्ट है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है. पाकिस्तान में थोड़े से केसेस डिफरेंट भी हैं, बट अल्टीमेटली दे विल रिवॉल्व समथिंग अराउंड दिस. इसमें एक कंपोनेंट, एक वर्ड यूज होता है, डीकार्बनाइजेशन. आपके ख्याल में क्या हो सकता है डीकार्बनाइजेशन? सो अभी हमने जिस तरह शर्ट की एग्जांपल ली, इस मार्कर की एग्जांपल ली कि इसकी प्रोडक्शन में देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन. ओके, सो इन केस आप फॉर एग्जांपल कह लें कि ये मार्कर जो है ये कराची में बना और वहां से इस्लामाबाद आया, ऑल्दो कि यही मार्कर जो है फॉर एग्जांपल हरीपुर में बन रहा है. ओके, तो व्हाट मशीन लर्निंग या वो जो कंपोनेंट है या बेटर प्लानिंग कैन हेल्प इज कि अगर हम बजाय इसको कराची से मंगवाएं, अगर हम इसको हरीपुर से मंगवाएं, तो इसकी जो कार्बन एमिशंस होंगी दे विल बी रिड्यूस्ड. सो दैट इज डीकार्बनाइजेशन. ओके, सो इस वर्ड के लिहाज से वी विल सी ऑन हाउ मशीन लर्निंग या एआई या जो भी कंपोनेंट आप डिस्कस कर रहे हैं वो कैसे सपोर्ट कर सकता है. इन द पावर सेक्टर ऑफ कोर्स जो अभी हमारे पास लाइन लॉसेस, जो ट्रांसमिशन, जो भी कंपोनेंट्स अभी एग्जिस्टिंग मौजूद हैं, उनके अंदर हम देखते हैं कि लाइन लॉसेस इज अ मेजर कंसर्न. नो, सो वो लाइन लॉसेस अगर हम उनको रियल टाइम मॉनिटर कर लें, सो वो दैट रियल टाइम मॉनिटरिंग कैन हेल्प. सो उस चीज का जो डाटा सेट है या इवन जो एग्जिस्टिंग डाटा है मौजूद है, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, दैट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट. ओके, सो उस कंपोनेंट के अंदर मशीन लर्निंग कैन सपोर्ट. नॉट ओनली दैट, उसके अलावा जो पावर फ्लो एनालिसिस है, दिस इज मोर ऑफ एन इंजीनियरिंग टर्म, सो दैट कैन आल्सो बी सपोर्टेड बाय मशीन लर्निंग, विच इज जब भी हमारा सिस्टम जितना एफिशिएंट काम करेगा, उसकी जो कार्बन एमिशंस हैं या उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है, दैट इज रिड्यूस्ड. Okay, so same goes for the virtual power plants. If we have that component within the like on the monitor or something, so that is comparatively better to manage. And lastly, battery की जो chemistries हैं, so अभी हम पहले बात कर रहे थे कि 40,000 megawatt हमने मंगवा लिया है, but the problem is we cannot store that. So ultimately people are moving more towards storage कंपोनेंट. और उसके अंदर अभी लाइक रिसेंटली भी एक स्टूडेंट ने साइंस में भी शी वर्कड ऑन लिथियम आयन बैटरीज, और उसके अंदर शी जस्ट ट्राइड टू कंप्यूटेशनली, मतलब नॉट फिजिकली, कंप्यूटेशनली शी ट्राइड टू चेंज द केमिस्ट्री ऑफ द एनोड, एंड थ्रू विच शी कुड इंक्रीज द कैपेसिटी, the decharging and the life for that battery for almost 30%, 40%. So the problem is कि वो जो भी existing components मौजूद हैं, we need to make them more efficient so that जितने भी losses हैं, वो जो component है वो reduce हो सके. Food systems आप कह लें या agriculture कह लें, तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट है, ये सप्लाई चेन है, दैट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टेशन. सो उस कंपोनेंट को इफ वी कैन, अभी आप जब भी सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, यू विल ऑलवेज लिसन टू पीपल सेइंग कि जनाब प्लीज बाय लोकल. सो वो लोकल का कॉन्सेप्ट सस्टेनेबिलिटी के पीछे ये है कि अगर आप लोकल खरीदेंगे तो दैट मीन्स कि वो जो कार्बन एमिशंस हैं दैट विल बी रिड्यूस्ड. इफ आई बाय अ शर्ट फ्रॉम लाइक H&M, Zara, तो वो पता नहीं कहाँ से घूम घुमा के आएगी,
लेकिन अगर मैं ये जो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल है, अगर मैं वहां से शर्ट खरीदूंगा, दैट इज कंपैरेटिवली मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, मोर सस्टेनेबल। ओके, सो एग्रीकल्चर के अंदर जो एमिशंस हैं उस चीज को, या इवन जो उसके अंदर एक्सेसिव, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर अपने अप्लाई करना है, बट वी रियली डोंट नो कि किस प्लांट को कितना चाहिए। सो दैट इज अ कंपोनेंट वेयर सेंसर्स and satellite based monitoring is coming in. So through satellites based imaging, even through sensors, so we can get an idea like on how, like किस soil के अंदर कितना पानी मौजूद है, किस टाइम पे हमें पानी देने की जरूरत है, किस टाइम पे हमें फर्टिलाइजर देने की जरूरत है। So same is the case with the like वो जो virtual farms वाला component है, even जो weather है, अभी जो major problem हम face कर रहे हैं agriculture में, हमारे farmer ने अक्टूबर में गन्नम लगानी है, he or she doesn't really know कि मार्च में क्या बनेगा। Okay, so वो 6 month prediction जो है, that is also not accurate. Of course the validation component is there कि हमारे पास local weather stations कम है comparatively, लेकिन वो जो satellite based आप कह लें कि जो predictions हैं, या even models based जो predictions हैं, they are also not serving the purpose. So that component is where machine learning can help agriculture and food systems. It's not only that food systems के अंदर with the calories and everything, that component coming in, so they can also support us in better chemistries, like for example kis jo like may, what I believe is in the coming days or coming generations, हर एक के लिए इंडिविजुअल जो है वो मॉडल और जो भी होगा वो उसके लिए फूड सजेस्ट कर रहा होगा ना। So that is a component which ultimately will be helped through machine learning and AI and all the other components. So manufacturing के अंदर again supply chain हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो जितनी ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस होगी, एमिशंस रिड्यूस होंगी, लेकिन उसकी एफिशिएंसी इट हैज ऑलवेज बीन एट स्टेक, एंड वी रियली डोंट नो। हमारे ट्रक्स जो हैं वो सारा दिन रोड्स पे फिरते रहते हैं, बट अल्टीमेटली उसके लिए देयर आर बेटर सॉल्यूशंस। सो विद द कनेक्टिविटी, विद मोर इंफॉर्मेशन एंड विद machine learning based processing, we will really be seeing a change, and that we expect we can see anytime soon. So उसके अलावा जो मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल अभी के लिए जो प्लास्टिक को जितने भी मैनुअल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने अगर ये एक मोल्ड बनाना है तो उनको कोई हीट, कोई टेम्परेचर, कोई बायोमास से गर्ज नहीं है। सो वो बस बर्निंग, कॉन्टिन्यूस बर्निंग। अगर इसकी मेल्टिंग के लिए टेम्परेचर 400 डिग्री चाहिए तो वो चाहे 800 डिग्री कर रहे हो। So that efficiency is required so that we do not waste the resources. It's not only about the manufacturing, but also in the supply chains and later on. For example, जो उसकी recycling वाला component है, यही जो कैप है, इसके आगे कई और मटेरियल्स बन सकते हैं, बट वी रियली डू नॉट नो, और वो उसकी जो डिसीजन मेकिंग है दैट कैन बी सपोर्टेड बाय मशीन लर्निंग। सो लाइकवाइज जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है, सो अभी हम विद द डिसेंट्रलाइजेशन कमिंग इन, हम देखते हैं दुनिया में ऑलरेडी कार पूल्स और इस तरह के कंपोनेंट्स मौजूद हैं। सो नॉट ओनली दैट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी ट्रैकिंग कंपैरेटिवली इजी है, नो। सो इवन ट्रेन सिस्टम्स हमारे अभी भी वो रेड लाइट लेके खड़े हैं, ग्रीन लाइट लेके खड़े हैं, बट इन द वर्ल्ड व्हाट इज हैपनिंग इज इट्स ऑल, वो वर्चुअली हर चीज मौजूद है एंड दे आर कंट्रोलिंग दैट। जापान का मतलब एक स्टेशन पे ऑलमोस्ट एक टाइम पे 100 पता नहीं कितनी ट्रेन गुजर रही हैं। सो दैट इज नॉट पॉसिबल टू मैनेज थ्रू आवर ब्रेन, no. So if we have machine learning and that component involved, so we can have better decisions. So इसके अलावा भी ऑफ कोर्स जो फ्यूल्स वाला कंपोनेंट है, सो जितनी भी हाइब्रिड कार्स आप देखते हैं अभी विद द हाइड्रोजन जो फ्यूल बेस्ड कार्स हैं, सो ऑल ऑफ देम दे आर kind of involving that machine component which will ultimately decide जो automatic fuel injectors हैं। so that is just an example कि उसको पता है जनाब के इस टाइम पे कितना फ्यूल उसको चाहिए, तो इट विल थ्रो, नहीं तो उसको ब्लॉक करके रखेगा। ट्रैक्टर्स और जो बड़े ट्रक्स वगैरह हैं उनके अंदर धड़ाधड़ फ्यूल जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, बट अल्टीमेटली दैट मच फ्यूल इज नॉट नेसेसरी टू बी यूज्ड। सो जस्ट टू क्विकली like go through
एविएशन के अंदर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स एक नई टर्मिनोलॉजी है। नॉट ओनली दैट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको बेहतर मैनेज किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट्स या इवन एयरपोर्ट का जो सिस्टम है उस सारे के सारे को अगर हम ऑटोमेट कर लें, सो दैट लिटरली कैन हेल्प। कई बार एक जो एरोप्लेन है वो 2 घंटे फॉर एग्जाम्पल उधर खड़ा है, टैक्सी लाइक दैट इज, लेकिन उसका इंजन रनिंग है ना, सो दैट द प्रॉब्लम इज कि वो उस ह्यूज अमाउंट पे फ्यूल यूज कर रहा है एंड समटाइम्स वो जब वापस आएगा तो 6-6 चक्कर उसको उधर लगाने पड़ेंगे बिकॉज देयर इज नो रनवे फ्री। सो दैट कंपोनेंट इज आल्सो समथिंग वेयर machine learning and AI models they can help. In this building we are utilizing it very inefficiently because हम सब की पाकिस्तान में it's a funny quotation, like हम सर्दियों में हीटर चला के कंबल उतार के सोना चाहते हैं और गर्मियों में हम एसी चला के कंबल लेके सोना चाहते हैं। The problem is we have been utilizing the resources very inefficiently. आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव नेचुरल लाइट, लेकिन हमने ब्लाइंड्स बंद किए हुए हैं, सो हु केयर्स। सेम इज द केस विद द वेंटिलेशन। सो हम पहले सारे खिड़कियां दरवाजे बंद करेंगे, फिर वहां पे एयर प्योरीफायर लेके आएंगे ताकि उसको क्लीन कर सके। नो, दैट इज नॉट नीडेड। हमारे जो बड़े थे दे हैड बेटर बिल्डिंग डिजाइंस, सो दैट कंपोनेंट इज अगेन समथिंग वेयर machine learning and other models they can help us make better buildings. For example, अभी तक जितनी पाकिस्तान में बिल्डिंग्स बनती हैं सारी ईस्ट टू वेस्ट हैं, वो सीधा पहले सूरज इधर से गर्मी देता है फिर उधर से आके देता है। The problem is if we can just tilt it, like of course we with better decisions, so we can definitely save huge amount of energy. Not only that, जो material हम use कर रहे हैं, in Japan there is no concrete in the walls because concrete वो उसको absorb कर लेगा ना heat को। Not only that, उसकी जो structures हैं, so everything of course that needs more research, more like आपके पास जो भी available facilities हों, people truly are utilizing those LLMs and everything to change their rooms, उनके घर की setting and everything, वो तस्वीर दी उसने बता दिया, so that is more efficient now. So that component is coming into play where we will be deciding based on machine learning and other models on how to manage them better. So carbon capturing is another technology, carbon capture and storage, CCU, CCUS. इस कंपोनेंट का मकसद ये है कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर मौजूद है, we should extract that. Okay, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स केमिस्ट्री है, कई और फिजिकल तरीके हैं, बट अल्टीमेटली उसके अंदर भी वी विल बी लुकिंग फॉर more machine learning and AI based decision making through which we can get multiple benefits, yeah, majority of the efficiency of carbon capture and storage. So I will just quickly go through nuclear energy. Maybe definitely the management is something जो कि difficult है, and with the machine learning and that component coming in, that can be better. So almost the last component, greenhouse gases की emissions. So we have the models which can just use the satellite imaging and they can estimate, okay, how much carbon dioxide or how much methane is being emitted from that particular region. Okay, but उसको अगर हम in case measure करना चाहें through wet lab techniques, so it's a very laborious and very costly component. So with those sensors and everything, अभी वो air quality meters आप देखते हैं जगह जगह लोगों ने लगाए हुए हैं, so that component is bringing a lot of data. लेकिन उस डेटा की जो यूटिलाइजेशन है, उसकी इंटीग्रेशन है, so that is another component which will be better utilized when we have machine learning and other models coming in. So lastly, like a material innovation में, of course, it is not something कि वो बार बार हम उसको बना के try करते रहें. So we will have, we can literally skip that process, or ultimately we will come up with 2 to 3 options जो work करेंगे ना. So that is another component which we are expecting. And lastly, extreme weather events की prediction. It truly has not been possible. हमारे early warning system, GLOF 1, GLOF 2, पूरे GB के अंदर बड़ा शोर मचा, 500 million something, इससे भी ज्यादा जो है पैसे वो लग चुके हैं, but they failed. वो 3 शेफर्ड जो हैं, they helped better. जो गीजर में अभी recently glacial lake outburst flooding हुई ना. So
द प्रॉब्लम इज कि वो जो हमारे सिस्टम्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे फिजिकल हो, सो दे मे नॉट हैव, फॉर एग्जांपल स्वात रिवर, ये रिवर है, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। हमने क्या किया, हमने सॉरी टू नेम, जिक्की वालों ने एक सिस्टम बनाया कि जनाब यहाँ पे एक कैमरा लगा दिया, वो जैसे ही बहाव बढ़ेगा तो वो जनाब जब रेला आएगा तो उस टाइम बताएगा ना कैमरा। हाउ अबाउट दोज ट्रिब्यूटरीज, अगर इफ वी हैव सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग कि जनाब इस ट्रिब्यूटरी में इस टाइम वाटर का लेवल ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, व्हेन दे आर कंबाइंड सो दे विल बी ह्यूज। नो, सो वो जो कंपोनेंट है उसकी not only remote sensing but also processing that much of information, so that is something not possible, and there is a huge gap particularly in Pakistan. So just to conclude, in case agar aap if you really are into climate or sustainability component in Pakistan particularly, so there is a huge space. So early warning systems is one of the components जिसमें बहुत ज्यादा काम की जरूरत है. At least a chatbot anyone or everyone can develop now. So when a farmer या जो भी उससे पूछे कि जनाब आगे 6 महीने में क्या कंपोनेंट बनेगा या वेदर कैसा होगा, आगे कौन से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं, so that एक वो जो भी चैटबॉट होगा वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके इट विल गिव रिजल्ट. So वो early warning systems is one component which is receiving more and more attention, and it will receive. In industry, they need to reduce their carbon emissions. Carbon credit, carbon market, ये आजकल टर्म्स आप सुनते होंगे. दैट इज बेसिकली कि ये फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, ये इतनी एमिशंस कर रही है, फैक्ट्री ए है, यहाँ पे एक और फार्म है बी जो कि ट्रीज लगा रही है, ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही है फॉर एग्जांपल 100, और ये जो है वो 100 कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रही है, उसको स्टोर कर रही है, अल्टीमेटली दिस कंपनी विल हैव टू पे टू द अदर पर्सन, वो जितना वो डैमेज कर रहे हैं दूसरे को पे करें जो उसको बचा रहा है. सो दिस इज कार्बन मार्केटिंग या कार्बन क्रेडिट्स कंपोनेंट. सो विद दैट कमिंग इन, एवरी इंडस्ट्री, एवरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय 2026 के स्टार्ट में दे हैव टू रिपोर्ट कि उनके एक शर्ट बनाने में कितनी कार्बन एमिशंस हुई हैं. एंड लिटरली देयर इज अ ह्यूज स्पेस जिसमें पीपल दे आर नॉट रियली aware of how to calculate that, how to report that, or even how to estimate that. So with that, I think I have taken more of your time. So we will quickly conclude, and if you have any quick questions, so we can take that. Otherwise, we are good to go. So thank you so much. So okay, so there are chairs. So please do let me know if you have any quick questions. Okay, thank you very much, sir. Very कह सकते हैं आप informative और interesting and research oriented talk by Dr. Ahmed Mahmood. Thank you very much again. Basically, जैसा कि आप जानते हैं कि we are जो doctors type लोग होते हैं जिन्होंने PhDs वगैरह कर रहे होते हैं, they are mostly like research hungry people. तो जैसे जैसे मैं इनकी टॉक सुन रहा था उसके साथ साथ मेरे ध्यान में बहुत सारे रिसर्च आइडियाज आ रहे थे कि बेसिकली हम इस टॉपिक पे भी रिसर्च कर सकते हैं, ये टॉपिक फॉर एमएस लेवल रिसर्च हो सकता है, दिस टॉपिक कैन बी फॉर पीएचडी रिसर्च लेवल, पीएचडी लेवल की रिसर्च हो सकती है. तो बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट सेक्शन विद प्रैक्टिकल, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर. So you can take my line from or even just type it in here. Best of luck. I will share some research topics जो कि हमने इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर से हमने देखे. देन आपका बेसिकली क्या काम होगा, बेस्ड ऑन दैट रिसर्च टॉपिक्स आप अपना डाटा डेवलप कर सकते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन दैट डाटा आप उसके ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूटिलाइज करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन अबाउट रेनफॉल, अबाउट राइज इन टेम्परेचर, अबाउट हाउ टू डिजाइन बिल्डिंग्स इन पाकिस्तानी रीजन्स. तो लाइक दैट आप ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट बताया था फूड कंपोनेंट. तो वेयर इज फूड कंपोनेंट? ओके, अब
बेसिकली यहाँ पर जो ये डिस्कशन हो रही थी, बेस्ड ऑन दैट मेरे जहन में जो एक रिसर्च आइडिया आया वो ये कि हम फूड कंपोनेंट में जो आजकल मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल जो एक कंसर्न है वो रिलेटेड टू फूड हैबिट्स। बेसिकली हम लोग अपनी फूड हैबिट्स हमारी टोटली चेंज हो रही है, बेस्ड ऑन दैट हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारी हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। और फॉर दैट पर्पस क्या होता है, हमें किसी न किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना पड़ता है, उनसे टाइम लेना, उनसे मंथली बेसिस पे और इवन के वीकली बेसिस पे मीटिंग्स करना एंड उनसे अपनी फूड डाइट प्लान ईच एंड एवरीथिंग हम उनसे लेते हैं। बट रादर देन हम एक फिजिकल न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, व्हाई नॉट हम एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या डिजिटल न्यूट्रिशनिस्ट क्यों ना बना लें, राइट। उसके अंदर बेसिकली हमारा ट्रेनिंग कंपोनेंट क्या होगा, हम बेसिकली उसके अंदर फ्रॉम एज ऑफ 20 टू एज ऑफ 60 जो पीपल्स के अंदर, जो लोगों के अंदर चेंजेस आती हैं, उनके जो पैरामीटर्स होते हैं, लाइक उनका बॉडी, उनका वेट, उनका स्ट्रक्चर, उनका जेंडर, ईच एंड एवरीथिंग, हम उस कंपोनेंट को, उस डिजिटल न्यूट्रिशनिस्ट को ट्रेन करवाएं। एंड देन जब हम उससे क्वेश्चन करें कि फॉर एग्जांपल आई नीड अ डाइट प्लान, तो देन वो हमें हमारा आगे से क्रॉस क्वेश्चन करे, ठीक है, ओके, गिव मी दीज पैरामीटर्स लाइक योर नेम, एज, डेमोग्राफिक एरिया, अपनी जो डेली हैबिट्स हैं वो बताएं। देन बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वो हमें आगे हमें डाइट प्लान दे दे। तो ये एक रिसर्च आइडिया मेरे ध्यान में आया था कि आप इसके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फूड सिस्टम और फूड कंपोनेंट लाइक दैट। इसके अलावा हमारे पास जो लाइन लॉसेस की बात थी, जो भी हम एनर्जी सेक्टर की बात हो रही थी, उसमें हम बेसिकली हमारे पास जो लाइन लॉसेस की वजह से राइज इन टेम्परेचर हमारे पास बहुत ज्यादा हो रहा है ऑन एवरी डे। तो बेस्ड ऑन दैट आप क्या कर सकते हैं कि हमारे पास अगर हमारा जो वापटा का डिपार्टमेंट है वहां से हमें डाटा मिल जाए कि एक फॉर एग्जांपल फ्रॉम 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो हमारी एक लाइन जा रही होती है 50 केवी की, उसके ऊपर कितना लाइन लॉसेस होता है। देन बेस्ड ऑन दैट डाटा, आप इस तरह का डाटा जब कलेक्ट करेंगे तो आप अपने सिस्टम को ट्रेन करवा सकते हैं इस डाटा के ऊपर, एंड देन उससे आप नेक्स्ट प्रिडिक्शन करवाएंगे कि अगर यही लाइन हम इसी कैपेसिटी की हम 20 किलोमीटर तक लेके जाएंगे ऑन दिस वेदर कंडीशन, हमें कितना लाइन लॉस हो सकता है, और उस लाइन लॉस के बेस पे हमें कितना वेदर जो है ना वो उसके अंदर टेम्परेचर का राइज हो सकता है। तो ये हम उसके थ्रू फ्यूचर प्रिडिक्शंस करवा सकते हैं। ये भी एक रिसर्च एरिया बनता है इन क्लाइमेट चेंज, राइट। एंड देन इसके साथ साथ हमारे पास एक और कंपोनेंट है वर्चुअल पावर प्लांट। जब हम आप पावर प्लांट प्रैक्टिकली डिजाइन करते हैं तो उसके ऊपर हमारे को बहुत ज्यादा जो है ना आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एज वेल एज ह्यूमन पावर, और इसके साथ साथ आफ्टर दी कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट पावर प्लांट, वो जो पावर प्लांट जिस तरह भी क्वेश्चन हुआ था कि हम मशीन लर्निंग को तो यूज कर रहे हैं, बट मशीन लर्निंग इटसेल्फ बहुत ज्यादा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड राइज इन टेम्परेचर का को जो वो रीजन बन रही है। तो जब हम पावर प्लांट लगाते हैं फॉर दी जनरेशन ऑफ एनर्जी, तो हम उस एनर्जी को यूज करते हैं फॉर आवर इलेक्ट्रिकल और एनी अदर पर्पसेस। बस अलोंग दैट वो जो पावर प्लांट है वो खुद भी एनर्जी जनरेट करते हुए बहुत ज्यादा इमिशंस दे रहा होता है। तो उसकी एमिशंस की फ्यूचर प्रोजेक्शन के लिए कि आपके पास इतनी कैपेसिटी का पावर प्लांट होगा, उसके अंदर जो आपके पास इक्विपमेंट है वो इस कैपेसिटी के होंगे, तो राइट नाउ वो इतनी टेम्परेचर राइज कर रहा है इन डे टाइम और इन नाइट टाइम, देन इन फ्यूचर, और अगर उसको डेमोग्राफिक एरिया हम चेंज करें हमारे पास फ्यूचर में क्या चेंजेस आ सकती हैं, ये भी एक रिसर्च एरिया बनता है। और यहाँ पर जो लास्ट मेरे जहन में आया वो ये है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हमारे पास कुछ सिविल इंजीनियर भी हैं, तो स्पेशली उनके लिए बेसिकली जिस तरह भी सर ने बताया कि राइट नाउ हमारा जितना भी वो एक कन्वेंशन है, हम ईस्ट टू वेस्ट अपनी बिल्डिंग की जो है ना वो उसकी डायरेक्शन रखते हैं, ठीक है, बट हम इसको नॉर्थ एंड साउथ भी रख सकते हैं। तो हम ये चीज प्रिडिक्ट करवा सकते हैं सिस्टम के थ्रू, ईस्ट एंड वेस्ट के थ्रू हमारी जो एनर्जी है, जो हमारे रूम टेम्परेचर जो इंक्रीज करता है, अगर हम उसी ही बिल्डिंग को नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन में लेके आए, उसके अंदर राइज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा, तो इस तरह की रिसर्च हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस टॉक। तो ये मेरे ध्यान में कुछ टॉपिक आए थे तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलो बिफोर गोइंग टू द प्रैक्टिकल सेशन। तो अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। what can Pakistan from Japan in this challenge? अच्छा सर तो चले गए, बट मैं चला उनसे क्वेश्चन करके ईमान हुसैन आपके इस क्वेश्चन का आंसर हम कर देंगे। ओके, इससे पहले भी आर यू ऑप्टिमाइजिंग अबाउट वेयर पाकिस्तान इज हेडेड एंड, ठीक है,
ये 2 क्वेश्चन है, ये इंशाल्लाह मैं उनसे लेके आपको इनका आंसर कर देता हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी देर बाद। बट अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। बेसिकली जो हमारा इसके साथ बाद सेशन है रिफ्रेशमेंट का है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट होगा 11:15 पे। 10 मिनट है, हम विद इन 10 मिनट हम अपनी जो नोटबुक्स हैं हम उनको रेडी कर लेते हैं, ताकि जैसे ही हम आफ्टर रिफ्रेशमेंट हम आए हम प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम शुरू कर लें। तो प्लीज आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने सिस्टम पे लॉग इन कर लें, और उसके साथ आप लोगों के साथ मैंने कुछ फाइल्स शेयर की थी डॉक्टर जाकिर ने, प्लीज वो फाइल्स अपने पास ओपन कर लें सिस्टम के अंदर। एंड उसके साथ साथ जो आपको दी गई थी CSV फाइल्स, वो भी अपने पास रेडी कर लें, ताकि हम उनको जैसे ही अपलोड करें तो हम रेलिवेंट फाइल्स को अपलोड कर सकें एंड देन उनको हम यूटिलाइज कर सकें फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा करके देखेंगे जी? हाँ, मैं वो लिंक शेयर, मैं नोटबुक शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स प्लीज हमारे पास 10 मिनट हैं, आप अपनी नोटबुक रेडी कर लें एंड देन उसके बाद हमारा रिफ्रेशमेंट का ब्रेक होगा। देन आफ्टर दैट हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क शुरू कर देंगे इसके ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों के पास ये 4 फाइल्स होनी चाहिए। मैं ये शेयर कर देता हूँ। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आप सब लोगों के पास ये फाइल्स मौजूद हैं, प्लीज कंफर्म कर दें। शेयर द लिंक। ओके, मैं इधर से शेयर कर देता हूँ। ओके, सब लोगों के पास प्लीज ये फाइल्स ओपन कर लें अपने पास गूगल को लैब में, एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास ओपन कर लें दी जिसके हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। Basically, first of all, inshallah, we will discuss about how we can handle missing value in our data. जिस तरह कल क्वेश्चन भी आया था कि हमारे पास ऑलवेज एक परफेक्ट डाटा नहीं होता, हमारे पास बहुत सारी उसके अंदर वैल्यूज होती हैं, वो मिसिंग्स होती हैं। देन अब उन मिसिंग वैल्यू को हम कैसे हैंडल करेंगे एंड देन उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे फॉर फ्यूचर पर्पसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद आप सब लोगों को एक
डेटा सेट दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आप लोगों ने वो खुद सी चीजें अप्लाई करी, वो जितने कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे मिसिंग वैल्यूज के, वो खुद से आपने अप्लाई करने होंगे उसके ऊपर, राइट। एंड देन उसके बाद हम कुछ क्लाइमेट डाटा है हमारे पास अबाउट रेनफॉल प्रिडिक्शन, अबाउट राइज इन टेम्परेचर, एंड देन उनके ऊपर हम इंशाल्लाह अपना प्रैक्टिकल सेशंस करेंगे कि हम कैसे डिफरेंट डाटा को यूज करके रेनफॉल प्रिडिक्शन करवा सकते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट मॉडल्स रन करेंगे, एंड देन उन मॉडल्स की एवोल्यूशन मैट्रिसेस को फाइंड आउट करने के लिए उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे, एंड देन एट द एंड हम यूज चेक करेंगे किस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज को यूज करके अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके पास रेडी होनी चाहिए फाइल फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, एंड देन सेकेंडली इसके बाद आप अपनी फाइल अरेंज कर लें रेनफॉल प्रिडिक्शन, जो आपकी प्रैक्टिस होगी जिसके ऊपर रेनफॉल प्रिडिक्शन विद मिसिंग वैल्यूज, राइट। एंड देन उसके बाद आप लोगों ने एडजस्ट कर लेनी है अपने लिए फाइल यस जिसके साथ 1 लिखा हुआ आ रहा है कि मशीन लर्निंग क्लाइमेट रेनफॉल वर्कशॉप, ये फाइल, एंड देन लास्टली आपने जो 4 वाली फाइल है जिसके साथ 4 अप्लाइड मशीन लर्निंग 360 डिग्री डे 2 लैब क्लाइमेट एप्लीकेशन, आपने ये फाइल सेट कर लेनी है। तो फॉर दीज 4 फाइल्स आपके पास जो डाटा है वो कौन कौन सा होना चाहिए, वो भी मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। आपके पास क्लाइमेट अंडरस्कोर डाटा डॉट CSV फाइल होनी चाहिए, राइट। एंड देन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस डेली मिनिमम टेम्परेचर इन मी, ये फाइल होनी चाहिए आपके पास। और आपके पास हाउस वैल्यू विद मिसिंग डॉट CSV, ये फाइल होनी चाहिए। रेनफॉल प्रिडिक्शन विद मिसिंग, एंड देन टेम्परेचर एनोमली डाटा सेट, ये फाइल्स आपके पास रेडी होनी चाहिए। बेसिकली हम इन लैब्स के अंदर ये सारी CSV का डाटा यूज करेंगे अपने प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। क्लियर? अगर किसी के पास ये फाइल नहीं है तो प्लीज बता दें, देन हम शेयर कर देते हैं उसको अगेन। अदरवाइज हम चलते हैं फिर खाने पीने की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा, एंड देन इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल सेशन शुरू करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, चलिए से हम्म ये भी हम करते हैं, ये हम डायरेक्ट ऑफलाइन हम यहाँ से अपलोड कर लेंगे, बस उसका पास दे देंगे हम। हाँ, ऑफलाइन पास दे देंगे। ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से टेस्टिंग पर्पज के लिए हम जो है ना वो ऑफलाइन यूज कर रहे हैं। हाँ, ये तो वो लोकल पाथ है ना, जबकि आप इस वक्त सर्वर पे काम कर रहे हैं, क्लाउड सर्वर में, तो लोकल सिस्टम का पाथ नहीं उठाता। नहीं नहीं, वो आपने इस सर्वर पे अपलोड करनी है तो यहाँ का वो पाथ एक्सेस करवाएगा। जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स प्लीज अभी हम चलते हैं रिफ्रेशमेंट की तरफ। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल जो टाइम है वापस हैंड्स ऑन सेशन का वो 12:15 है, बट हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एट राइट 12 o'clock हम अपना सेशन स्टार्ट कर लें। क्लियर? तो जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं प्लीज आप लोग कोशिश करें कि 12 बजे तक, एग्जैक्टली 12 बजे आप सब लोग ऑनलाइन आ जाएं, तो इंशाल्लाह हम उसके साथ ही अपना प्रैक्टिकल सेशन शुरू कर देंगे। क्लियर? प्लीज कंफर्म कर दें। एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स प्लीज कंफर्म करें।